नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश रावल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका आपके जीवन पर गहरा असर हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस समस्या के सामान्य लक्षणों से लेकर उसके समाधान तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ हम न केवल समस्या की जानकारी देंगे बल्कि उसके सही इलाज और बचाव के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही यदि आपके पास इस विषय से जुड़े कोई भी प्रश्न हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे नीचे टिप्पणी बॉक्स में सहयोगी जानकारी साझा करें। और ऐसे ही मेडिकल हेल्थ से जुड़े नए जानकारी पाने के लिए कृपया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वास्थ्य से जुड़े एक और नए टॉपिक की ओर धन्यवाद। बैड ब्रेथ, सांसों की दुर्गंध, जिसे हेलिटोसिस भी कहा जाता है, शर्मनाक हो सकती है और कुछ मामलों में चिंता भी पैदा कर सकती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुकानों की अलमारियां गोंद, पुदीना, माउथवॉश और सांसों की दुर्गंध से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए अन्य उत्पादों से भरी हुई हैं। लेकिन इनमें से कई उत्पाद केवल अस्थायी उपाय हैं क्योंकि वे समस्या के कारण का समाधान नहीं करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य स्थितियां और आदतें सांसों की दुर्गंध के कारणों में से हैं। कई मामलों में आप लगातार उचित दंत स्वच्छता से सांसों की दुर्गंध में सुधार कर सकते हैं। यदि सरल स्वदेखभाल तकनीक समस्या का समाधान नहीं करती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दंत चिकित्सक या चिकित्सक से मिलें कि कोई अधिक गंभीर स्थिति आपकी सांसों की दुर्गंध का कारण तो नहीं बन रही है। सांसों की दुर्गंध अलग अलग होती है जो स्रोत या अंतर्निहित कारण पर निर्भर करती है। कुछ लोग अपनी सांसों के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं भले ही उनके मुंह से बहुत कम या कोई गंध न आती हो, जबकि दूसरों को सांसों से दुर्गंध आती है और उन्हें इसका पता ही नहीं चलता क्योंकि यह आकलन करना मुश्किल है कि आपकी सांसों से कैसी गंध आ रही है। इसलिए किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से सांसों की दुर्गंध के बारे में अपने प्रश्नों की पुष्टि करने के लिए कहें। यदि आपकी सांसों से दुर्गंध आती है तो अपनी मौखिक स्वच्छता की आदतों की समीक्षा करें। जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करें, जैसे खाने के बाद अपने दांत और जीभ को ब्रश करना, डेंटल फ्लॉस का उपयोग करना और खूब पानी पीना। Bad breath doesn't always come from oral sources. In fact, issues in other areas of your body can sometimes make your breath have an unpleasant oral odor, such as acid reflux or bowel problems. Although these forms of bad breath are much less common than the forms created by poor oral hygiene or dry mouth, it does affect some people chronically. Bad breath is not necessarily caused by poor digestion, but it can sometimes indicate the presence of a digestive issue. For example, some people are actually born with a rare defect in a pouch in their esophagus. This pouch, the zenker-diverticulum, can be misshapen and can collect food particles, which decompose and release a foul odor whenever you speak or exhale. Those who suffer from this birth defect often experience regurgitation of undigested food when lying down or bending over, in addition to suffering from the effects of bad breath. Acid reflux or gastroesophageal reflux disease (GERD) can also prompt bad breath. In this chronic digestive condition, stomach acid and contents push up into the esophagus and lower throat, causing heartburn, esophageal damage, and bad breath. Alternatively, elevated amounts of gut bacteria may cause digestive discomfort and bad breath, especially after eating sugary foods. This is due to yeast and candida in the gut feeding on ingested sugars. To prevent this overgrowth, some doctors suggest eating probiotics and fiber regularly to cleanse your digestive system. To treat bad breath caused by digestive issues, speak to your doctor and your dentist about your concerns. Your doctor may recommend you to a gastroenterologist or other specialist, and your dentist can assist you in combating bad breath. Please like, share my video and यदि ऐसे परिवर्तन करने के बाद भी आपकी सांसों से दुर्गंध बनी रहती है तो अपने दंत चिकित्सक से मिलें। यदि आपके दंत चिकित्सक को संदेह है कि आपकी सांसों की दुर्गंध का कारण कोई अधिक गंभीर स्थिति है तो वह दुर्गंध का कारण जानने के लिए आपको चिकित्सक के पास भेज सकता है। अधिकांश दुर्गंध आपके मुंह से शुरू होती है और इसके कई संभावित कारण हैं। वे सम्मिलित करते हैं खाना, आपके दांतों में और उसके आसपास भोजन के कणों के टूटने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और दुर्गंध पैदा हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन और मसाले खाने से भी सांसों से दुर्गंध आ सकती है। आपके द्वारा इन खाद्य पदार्थों को पचाने के बाद वे आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं,
आपके फेफड़ों में ले जाए जाते हैं और आपकी सांस को प्रभावित करते हैं। Bad breath is caused by odor-producing bacteria that grow in the mouth. When you don't brush or floss regularly, bacteria accumulates on the bits of food left in your mouth and between your teeth. The sulfur compounds released by these bacteria make your breath smell. Our first ingredient is parsley, and take a look at the parsley leaves. Parsley leaves have chlorophyll in it, and the chlorophyll is going to be used as a deodorizer to get rid of your bad breath. Using parsley leaves can freshen your breath. You can also just choose to chew some parsley leaves, rinse your mouth, and it's definitely going to help to freshen your breath. Our second ingredient is lemon, and the citric acid stimulate saliva production and fight off bad breath. You can also make a lemon rinse by adding a tablespoon of lemon juice to water and rinse your mouth. Now, when I mix this lemon and parsley together, it's gonna create a more powerful remedy for getting rid of your bad breath. Our next ingredient is anise seeds. Just have a wonderful fragrance. And take a look at aniseed up close. Aniseed is known to eliminate the bacteria in your mouth that causes bad breath. Chewing on some aniseed will also help to get rid of the bad smell, as it tastes like licorice. Therefore, you will have a licorice flavor. You can also choose to boil the anise seeds and just gargle your mouth with it. Just rinse your mouth with it, and it's definitely going to help to freshen your breath. Now, cloves is also another wonderful ingredient for freshening that breath. You can choose to just chew or suck in a few cloves, and that's going to help to get rid of your bad breath. Cloves is also known to get rid of the bacteria in your mouth that causes tooth decay. Now, for this recipe, you are going to need a pot, since we are going to be boiling some of this ingredient. You're also going to need a grater. You're also going to need a jar, preferably a glass jar, for storing your mixture. Now I'm going to use 1 tablespoon of our star anise. A tablespoon. We're going to add that to the pot. And for our cloves, we're going to use about 12 of the cloves, about a dozen of the head, depending on the size. We're going to add that to the pot. And next, I'm going to add 2 cups of water. And I'm going to put this on the stove, and I'm going to boil this for about 10 minutes. Now, after boiling, it's going to boil down, and this is what it should look like. It's definitely going to smell really, really wonderful. Now, you're going to set this aside to cool. Set it aside overnight if you choose to cool down, and then we're going to move on to the next step. Now, once the anise and clove water has been cooled, you're next going to strain. And here we have the clove and anise water. Now we're going to move on to the next step, which is to add the other 2 ingredients. Now here we have our lemon, and we're going to remove the zest. We're not going to waste this lemon. We're using everything. We need about a teaspoon of lemon zest. So we're going to get this off. And here we have about a teaspoon of lemon zest. So next, we're going to do some blending. So we're going to add our lemon zest to our blender. Next, we're going to add a small bunch of parsley. Just use your discretion for this.
And we're going to take our anise and clove water and we're going to pour this in the blender. We're going to cover and we're going to blend. Now after blending, and this is some leftover star anise and cloves. I don't want to waste it, so you can just add it since the blender was small. This is what your mouthwash looks like after blending. And now we're going to strain this a second time. Next, we're going to reach for our lemon. And I'm using 1 medium lemon here. You can choose to add more lemon juice if you wish. And we're just going to squeeze the lemon juice. And get rid of the seeds and give it a stir. And now your mouthwash is ready. To store, just take a jar of your choice and just pour it in. And here you have your mouthwash for getting rid of bad breath. You can store this in your refrigerator for up to 7 days. It's gonna keep fresh. Now use this twice per day, AM and PM, for best result. To use this, you're gonna take a small amount, probably about a 1/4 cup, and you're gonna use it to rinse your mouth. You're gonna goggle, 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 and then you're gonna spit out. After spit it out, continue by brushing your teeth. You want to do this, as I said before, at least twice per day for best result. Now after using this the very first time, you're going to notice a big difference with your breath. With continuous use of this mouthwash, you're going to notice that your bad breath is gone. Just use it on a regular for maintenance after you get rid of your bad breath. Okay? So there you have it. Thank you all for watching. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to share the video and leave your comments. And if this was the first time watching, guess what? Look below. You're going to see the word subscribe. Click on it and you will be subscribed. Thank you all, and I'll see you in my next video. Bye-bye. शुष्क मुंह लार आपके मुंह को साफ करने में मदद करती है। दुर्गंध पैदा करने वाले कणों को हटाकर शुष्क मुंह या ज़ेरोस्टोमिया, ज़ियर ओस्टोमिया नामक स्थिति सांसों की दुर्गंध में योगदान कर सकती है, क्योंकि लार का उत्पादन कम हो जाता है। नींद के दौरान स्वाभाविक रूप से शुष्क मुंह होता है, जिससे सुबह की सांस आती है, और यदि आप अपना मुंह खोलकर सोते हैं तो यह और भी बदतर हो जाता है। क्रोनिक शुष्क मुंह आपकी लार ग्रंथियों की समस्या और कुछ बीमारियों के कारण हो सकता है। औषधियाँ, कुछ दवाएं अप्रत्यक्ष रूप से शुष्क मुंह में योगदान देकर दुर्गंध पैदा कर सकती हैं। दूसरों को शरीर में तोड़कर ऐसे रसायन छोड़े जा सकते हैं जो आपकी सांसों के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। आपके मुंह में संक्रमण। मुंह की सर्जरी के बाद सर्जिकल घाव जैसे दांत निकालना या दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारियां मुंह के घावों के परिणामस्वरूप सांसों की दुर्गंध हो सकती है। मुंह, नाक और गले की अन्य स्थितियां। सांसों की दुर्गंध कभी कभी छोटे पत्थरों से उत्पन्न हो सकती है जो टॉन्सिल में बनते हैं और बैक्टीरिया से ढके होते हैं जो गंध पैदा करते हैं। नाक, साइनस या गले में संक्रमण या पुरानी सूजन जो नाक से टपकने में योगदान कर सकती है, भी सांसों में दुर्गंध का कारण बन सकती है। अन्य कारण, रोग जैसे कि कुछ कैंसर और चयापचय संबंधी विकार जैसी स्थितियां।
उनके द्वारा उत्पादित रसायनों के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट सांस की गंध पैदा कर सकती हैं। पेट में एसिड का क्रोनिक रिफ्लक्स, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग या GRD सांसों की दुर्गंध से जुड़ा हो सकता है।